Hi everyone. Are we live? How do I check it? Oh yeah, we are live. हाल बहुत अच्छे हैं. ओके. अस्सलाम. ओके ओके ओके. हेलो. ठीक है. सर बोलो जुमा केसरी. ओके. विमल पान मसाला. अरे पान मसाला पे आई हैव समथिंग वेरी गुड ऑन पान मसाला बाय द वे. बट देन पान मसाला वाले पैसा भी अच्छा देते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सपोजिंग देम. क्या हाल प्रधान जी लौकी वाले. क्या हाल भाई. हैंडसम लग रहे हो. थैंक यू ब्रो. नो पिलर टू इम्प्लीमेंटेशन वोंट चेंज एनीथिंग. ठीक है. पिलर टू पे आई एम राइटिंग फुल रिसर्च पेपर. ठीक है. बट देन वो दैट रिसर्च पेपर विल गो टू सम ऑर्गेनाइजेशन जिसने हायर करा अपने को लिखने के लिए. सो ये एनीवेज आई विल शेयर दैट टू यू. अडानी को एक्सपोज करो. अडानी को नहीं करेंगे एक्सपोज. अडानी तो खुद ही एक्सपोज है यार. ठीक है. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. ओके. सो आई विल स्टार्ट विद दिस. दिस इज अ रियल लाइफ story which we guys discovered. ठीक है. How it starts is there was this. Ouch. बोर्ड सेंटिमेंटल है थोड़ा. बैंक मैनेजर. ठीक है. नाउ व्हाट दिस. What this bank manager did is, bank manager has power to disburse small loans. So what this particular bank management did is, so this is a real life story. What this particular bank manager did is, उसने बांटे आउच बेकार है. लोन्स वर्थ ₹90 crore. ठीक है. Now all of these were little small loans which this bank manager distributed. ठीक है. अब इसने ये लोन किसको बांटे. This person distributed all of these loans to friends, family, relatives or their firms. ठीक है. उसने ये सब लोन बांट दिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या फिर उनकी फर्म्स को. ठीक है. ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ऑफ दीज 90 CR वर्थ लोन टू फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड देयर फर्म्स. बेसिकली ऑल ऑफ दीज लोन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिमसेल्फ ओनली. ठीक है. जस्ट देयर नेम वॉज यूज्ड.
Now he made sure all the loans are complying with the banking norms. All of these firms have enough profit, enough net worth of all of these people are available, so that all the small loans can be distributed to these people. ठीक है. अब इसने अब इस so this is a real life event again I am telling you, okay, which we discovered. अब इस बंदे ने क्या करा, ठीक है. I'll just still write no fulfilling all the qualities. अबे ऑल कैसे लिखते हैं भाई. हाँ, ऑल नेटवर्थ, ठीक है. नेटवर्थ के बाद में प्रॉफिट्स रेशियोज फॉर लोन अप्रूवल, ठीक है. एंड देन दे वर्क प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक ऑफ कोर्स, ठीक है. गवर्नमेंट भी चलेगा, ठीक है, बट देन इट वाज अ प्राइवेट बैंक, ठीक है. व्हाट्स कुकिंग, ओके, कैन यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, ठीक है. एनीवेज, फिर इस बंदे ने क्या करा, दिस पर्सन, दिस बैंक मैनेजर, सारे लोन्स का पैसा गया है इसी पर्सन को. जस्ट ही यूज्ड ऑल ऑफ दीज फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड देयर फर्म्स नेम. नाउ व्हाट दिस पर्सन डिड इज साइमल्टेनियसली this person acquired approx 10 zombie firms, ठीक है. Now a bank manager has enough resources in his hands to acquire multiple zombie firms. So this person acquired 10 zombie firms approx, ठीक है, plus minus 1. Now what are zombie firms? As I have told before, zombie firms are basically firms which are financially struggling, ठीक है. They have enough amount just to repay the interest but just not to repay the principal. So zombie firms are firms which are only in survival because of the loan that banks are giving to them, ठीक है. If banks stop giving zombie firms loan, they will die. But still banks give zombie firms loan because of the reputation that the bank has to carry, plus the, let's say अगर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है and that company is unable to pay that loan and the company pressures the bank, if you want 1000 crore rupees of loans to be repaid back to the bank, then you give me more loan. तो बैंक क्या करती है, बैंक to make sure that the loan survives or that the party survives or that their amount of the loan that they have given survives, so they take another bet of giving more loans. One such company, one of the biggest company which is a zombie company is General Motors. Okay, it is a US company, very famous case of zombie firm. You can study about it. ठीक है. Now this bank manager acquired 10 zombie firms approx. ठीक है. Why did he acquire 10 zombie firms? So that he could establish a relation between friends, families, relatives जिसको उसने लोन दिया and this zombie firm. ठीक है. इनके बीच में उसने करवाई डील, ठीक है. नाउ दिस डील हैज ए स्पेशल नेम टू इट विच इज, किससे बनाए, अब सब तो गिर गया नीचे, गिरा. हाँ, ठीक है. ठीक है. पहला तो हो गया फेक सेल और सर्विसेज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू और देयर फर्म्स टू दी ज़ॉम्बी फर्म्स, ठीक है. सेकंड दे डिड इज, दिस इज द ऑफिशियल टर्म दैट दे कॉल डेट assumption
agreement. Put all this on YouTube. हाँ YouTube पे तो डालेंगे ही, YouTube से ही तो आएगा फिर कुछ. ठीक है. Anyways, this is the official term. ये this is a official banking term, debt assumption agreement. ठीक है. What happens in this is all the loan that the first party has taken is automatically transferred to the second party in the name of some service that the first party is giving to the another second party. ठीक है. कैसे? I'll tell you how. Wait, I have a blue marker. ठीक है. तो debt assumption agreement is a very broad term. I'll just summarize it for you. How does this work in this case? ठीक है. पहला तो हो गया business takeover और merger. ठीक है. Second is restructuring. Third is what? Strategic partnerships. ठीक है. इन व्हाट टर्म्स? सो दीज ऑल पार्टीज जिसने लोन लिया था, ठीक है, ऑफ 90 करोड़ एंटर्ड इनटू अ डेट अजम्पशन एग्रीमेंट विच इज आइदर 3 केसेस, या तो द बिजनेस टेक ओवर ऑफ द फर्म्स और द मर्जर, आइदर इनटू अ रीस्ट्रक्चरिंग केस, or either a strategic partnership of what? That all of these parties will give new revenue sources to zombie firms. Okay, and in return the zombie firm will acquire FFR. ठीक है. FFR, friends, families and relatives of the bank manager. ठीक है. This was the deal. Now in real life, in banking terms, this is the official term, debt assumption agreement, and in real life by RBI or by any bank, such a deal is not acceptable in banking norms, but the parties which are outside the banking norms generally enter into these deals and these deals happen. तो ऐसे ही इन्होंने इनके साथ में एग्रीमेंट साइन करा that zombie firms will be taking over all the loans and liabilities of friends, family and relatives, and in return they'll give new revenue sources, new revenue streams to the zombie firms. ठीक है. So this is all a proper documentation which happened in the name of merger, takeover, restructuring or strategic partnership. Now what happens is बैंक, अब आए बैंक की बारी. ठीक है. नाउ दी बैंक केम. ओके, बैंक आता है. बैंक किधर आएगा भाई? बैंक केम फॉर asset recovery. क्योंकि these people were not paying the loans. ठीक है. after year on year, time to time they were not paying on loans. तो बैंक आया for asset recovery. Now what happens is, what they did is
दिस पर्सन, अब zombie firm had the liability to pay through the bank, and जब बैंक का पैसा रिकवर नहीं हो रहा होता है तो बैंक इज लाइक कोई भी भरे पर उनको पैसा चाहिए, ठीक है. दैट्स व्हाट हैपन इन दीज केसेस. ठीक है, विल गेट अ बिगर बोर्ड. ठीक है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसका, आने दो. ठीक है, एनीवेज बैंक आया पैसा लेने. ठीक है, तो बैंक गया पहले इनके पास में, इन्होंने बोला हमारे पास में नहीं है, वी एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट, तो आप ज़ॉम्बी फर्म से ले लो. बैंक वाज लाइक वी डोंट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट, बट बैंक स्टिल ट्राइड विद दिस ज़ॉम्बी फर्म्स दैट कैन यू पेज द लोन. तो व्हाट दीज फर्म्स डिड इज, इन्होंने क्या करा, दे एंटर्ड इनटू एन ओटीएस विद दीज ज़ॉम्बी फर्म्स. ठीक है, ओटीएस इज व्हाट, वन टाइम settlement, that okay, you are unable to pay the loan, it's okay, what you are unable to pay the interest as well, whatever you can pay, you pay to us so that we can recover assets. And what this smart bank manager did is, he was the mastermind, no? So he did an OTS of 80%, which is super high. Okay, he told that, and no interest. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि दैट वील पे यू द 80% ऑफ द लोन ऑफ 90 CR, दीज ज़ॉम्बी फर्म्स से बुलवाया, एंड विल नॉट बी पेइंग इंटरेस्ट. सो व्हाट हैपेंड इन दिस इज, वीडियो अपलोड हो जाएगा ब्रो, है ना. What happened in this is 20% of the amount, which is what, 18 crore, eaten. ठीक है, this was the amount that was flatly vanished in the name of all of these transactions. ठीक है, and banks were pretty happy because they had an OTS of 80%, जहां पर उनको 0% आने वाला था. ठीक है, now all of this could be done easily via fake names or not involving all these transaction, all these agreement, all these documentation. But why did this person did all of this hustle just for 18 CR instead of directly taking loan in someone else's names? So what happens in banking is, every department is different. The OTS department is different. The person who does not agree to this agreement is different. The person who has distributed loan to these people is different. The person who is dealing with this is different. So he created an extremely complex structure just for the sake of complexity for the bank. And I studied all this case when this case came up with the audit committee. Every bank has one audit committee, which is the chairman plus the top level executive. Okay, they studied this case, and then finally they could not even catch hold of the bank manager because nothing was in his own name. Plus everyone was almost satisfied in this game. At the end what happened is, after the audit committee sat, there was no case proven and the file was closed. So this is a real life case that this bank manager used number of zombie firms to write over all the assets that he had. Plus this is orchestrated at a bigger level by regional branches, by regional managers, just because to fulfill their corrupt loans, or to fulfill the loans that they want to write off, and to fulfill the loans, to fulfill the liabilities that हम ये लोन नहीं बांट पाए, हम ये लोन रिकवर नहीं कर पाए. तो zombie firms are the main companies, they are used. ठीक है, and this is a personal case that I personally witnessed. I personally visited it, और documentations भी देखे थे मैंने, and it was pretty cool. So one rank approves the details first. Yes.
The bank approached the relatives first. Okay, relatives showed this agreement, debt assumption agreement, which the bank said we don't accept this and you must pay the loan. But then after getting tired from the relatives, they went to zombie firms. ठीक है, और zombie firms ने बोला we are ready to pay the 80%. For which, so banks are like जो भी पैसा दे रहा हो दो, but we need the money. नहीं यार, शर्ट पे तो इंक नहीं है. थैंक यू. Yeah, he got away with it. And currently also he is working properly in the bank. Just the audit committee knows this case, and yeah, they could not do anything about it. Case studies, pretty much we are writing an ebook on this, so maybe you get that ebook. Yeah, we'll save this session somewhere. Okay, anyone with some other questions? Bro, get me into indirector. Okay, bro, get me into independent director or into some company. Becoming an independent director is easy, but then you'll have to fulfill the liabilities of the company, whatever that company does in that time period. You are also liable for all of that. तो ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रिकमेंड कर देंगे कहीं पर. ही नीड अ पैन एंड आधार. Yes, he had a PAN and Aadhaar and documents to give out loans in the name of friends and family. Can you give summary for those you... Okay. No. Bank manager acquired those firms personally. He did not acquire it with the bank money. The bank manager acquired those loans, those zombie firms personally. ठीक है, चलो, I'll just re-go through the case. If any one of you have more questions, I'll just check it in this one. How to use your informative videos as I'm just a normal career. Okay, any employee, any person who wants to switch career, maybe we can start with generational wealth business ideas that anyone can fulfill. Okay. Underbilling luxury car and importing it. Okay, we'll cover it someday. Anyways, for the people who just came, I'll brief you the case again and then we'll close it, wrap it up for tonight. एक बैंक मैनेजर था, ठीक है, बड़ा होशियार बंदा, ठीक है, उसने लोन बांटे 90 करोड़ के फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स को एंड उनके ही नाम से फर्म को. उसने लोन बिल्कुल बराबर बांटे. ही फुलफिल्ड ऑल द नेटवर्थ, प्रॉफिट्स, रेशियोज एंड एवरीथिंग वाज अप्रूव्ड. ठीक है, इनको लोन बांटने में. ठीक है, फिर उसने क्या करा, उसने एक्वायर करी पर्सनल लेवल पे 10 ज़ॉम्बी फर्म्स. ज़ॉम्बी फर्म्स क्या होती है? जिनके पास में पैसा नहीं होता है चुकाने का, पर वो काम करती है, एम्प्लॉयज़ को भरती है, खुद अपना पेट भरती है, डायरेक्टर गाड़ियाँ लाता है, सब कुछ करता है. ठीक है, उसके बाद में उस ज़ॉम्बी फर्म्स से उसने डील करी, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और ज़ॉम्बी फर्म के बीच में उसने डील करी फेक सेल और सर्विसेज दिखा करके और डेट अजम्पशन एग्रीमेंट बना करके. ठीक है, दिस इज एन ऑफिशियल टर्म, यू कैन गूगल अबाउट इट. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह से उसने डील्स करी. उसने टेक ओवर और मर्जर करे, इन दोनों के बीच में रिस्ट्रक्चरिंग करी, उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करी. किस नाम से करी? दैट ज़ॉम्बी फर्म्स को वो नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स देंगे, ये वाले लोग, एंड इन रिटर्न ज़ॉम्बी फर्म्स एग्रीड टू एक्वायर ऑल दी लाइबिलिटीज ऑफ फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स. ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बैंक वाले आए कि यार लोन नहीं भर रहे हो भाई तुम, अब हमको थोड़ा बहुत पैसा दे दो. ठीक है, इन्होंने बैंक वालों को दिखा दिया ठेंगा. ठीक है, उसके बाद में बैंक वाले गए ज़ॉम्बी फर्म्स के पास में. ठीक है, अगर आपके पास में कुछ हो तो आप भरो, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि आपके पास में कुछ है और ये आपके साथ में डील में गए. वैसे दिस इज रॉन्ग फॉर अ बैंक पर्सन टू गो टू दीज पीपल,
बट जनरली असेट रिकवरी जब होती है ना तो बैंक नहीं जाता है, देयर इज ऑलवेज अ थर्ड पार्टी विच द बैंक हायर, बेसिकली पहलवान वसूली भाईज, ठीक है, बट वसूली भाई विद अ टाई एंड सूट, ठीक है, तो वो चले गए इनके पास में कि चलो इनके पास में तो इनसे ले लेते हैं अपन, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मना नहीं करा उनको, दे सेड वी आर रेडी टू पे, ठीक है, बट देन प्लीज फॉरगिव आवर इंटरेस्ट एंड विल पे 80% ऑफ द अमाउंट, ठीक है। अब 80% उन्होंने भरा, इवन द एसेट रिकवरी एजेंसी गॉट समथिंग, ठीक है, बैंक को अपना लोन वापस मिल गया, द बैंक मैनेजर एट द 20% ऑफ द अमाउंट, अप्रॉक्स 18 CR, ठीक है, और बस दिस फाइल वॉज क्लोज्ड विद ऑल ऑफ दीज पीपल गेटिंग रेड फ्रॉम द बैंक, बट देन इस बैंक से दे विल फाइंड अनदर बैंक, अनदर NBFC someday. So yeah, this is pretty much the case. I'll upload it, okay, with proper cuts and everything. Good night for tonight. Bye bye. How do I end it? सिबिल किसका खराब हुआ? सिबिल तो खराब हो गया उनका, फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव्स का, ठीक है। हाँ, दिस इज अ वेरी बिग लूप होल बिकॉज पीपल एक्चुअली डिड इट एंड लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट, ठीक है। अनदर थिंग, ऑल ऑफ दिस कुड बी डन इन अ इजी वे, वेरी सिंपल वे, दैट इसने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लोन बांटे और उन्होंने नहीं दिए, ठीक है, दिस इज द मोर कन्वेंशनल वे, बट देन दिस पर्सन वाज स्मार्ट इनफ टू इंक्लूड ऑल ऑफ दिस चेन। उसने इतनी बड़ी चेन इसलिए इंक्लूड करी टू क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेसीज, क्योंकि इन बैंक एवरीथिंग हैज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, प्लस जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेसीज होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही रियली यूज्ड दैट delegation of power in his favor. ठीक है, बाय बाय। किसी का कोई सवाल हो तो they can send it to on the this. Why recovery agents went to zombie firms and not took the actual assets from family and friends who took the loan? क्योंकि रिकवरी एजेंट को तो पैसा लाना है, ठीक है, वो पहले उनके पास ही जाते हैं, पर फिर जो उनको देने को तैयार होता है उससे ले आते हैं। इज देयर एनी कमीशन टेकन बाय यू फॉर कन्वर्टिंग दिस टाइप ऑफ मनी? यस। क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो नई बैंक लोन नहीं देगी, पर किसी और नाम से हो जाएगा फिर वो। एनीवेज, अगर एक बैंक वाले को 18 करोड़ रुपए आ जाते हैं जीवन में, ही इज सॉर्टेड, ठीक है। चलो, विल अपलोड इट, बाय बाय। किसी का और सवाल हो तो दे कैन आस्क ऑन द वीडियो डायरेक्टली, which gets posted